नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शीतल। P20 शिखर सम्मेलन का आज आखिरी और तीसरा दिन है। दुनिया के 30 देशों के महाकुंभ के सफल आयोजन का भारत गवाह बना। शानदार मेजबानी के लिए तमाम देशों के पीठासीन अधिकारी प्रफुल्लित नजर आए। समापन भाषण पढ़ते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि P20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने ब्राजील के चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज के स्पीकर को 10वें P20 सम्मेलन की मेजबानी सौंपी। पिछले 3 दिनों में लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, SDG में तेजी और सतत ऊर्जा में बदलाव जैसे मुख्य 4 विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। गहन मंथन हुआ और ज्वाइंट स्टेटमेंट पर आम सहमति बनी। संसद टीवी लगातार पिछले 3 दिनों से P20 से जुड़ी लाइव कवरेज दर्शकों तक पहुंचा रहा है। फिलहाल हमारे साथ आगे की चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं हमारे 3 खास मेहमान। एम्बेसडर DP श्रीवास्तव जो डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के, और प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जो सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज़ में प्रोफेसर हैं। साथ में प्रभु दयाल जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। Exactly, and Tipu, taking the discussion forward, Professor Sachdeva, in his closing remarks, the Honourable Speaker spoke of concerted effort in cooperation towards achieving the goals that we have set for P20. And then he also mentioned the global challenges before the world and P20 nations in general. What do you think is the most pressing need of the hour vis-a-vis the goals that we have set for ourselves as G20 member states? Thank you. Well, all the issues, particularly which 3 or 4 issues as we have been discussing in the last 3 days, from SDGs to women empowerment or women-led development or green transition, and also, of course, a digital public infrastructure. Now, these are the issues which are not new. At the same time, India has given prominence to some of these issues because things have changed. As you know, Sustainable Development Goals, this was adopted by the world in 2015. But as we saw even in the G20 summit, and if you look at all the progress report of SDGs from the UN, what 2023 report tells you that out of 169 targets, we have achieved, we are on the target only in 15% of those SDGs. And similarly, about 50% of those targets, somehow we are off track. And another 35% of those targets, we are either stagnated or actually we have regressed. So it means things are serious. And this has happened because of pandemic. This has also happened because of the war and conflicts and many other things which are happening. So obviously in G20 summit and also in this P20 summit, so this was an issue, how do we really accelerate this? Right. That's one. In many of these particularly issues, if you look at even the women empowerment issue or women-led development. Yeah. Here in fact, we are sitting in India. If you look at, say, for example, Indian Parliament, how many women parliamentarians we have? Roughly only about, I think, 15% of members of parliament here. So even our numbers are even below the global average, which is about 27%. And if you look at some other countries in the world, say, for example, if you look at all the European countries, and the average is somewhere around 30 to 40%. And of course, in the Scandinavian countries, you can find between 45 to 50% women, those who are members of the parliament. It's not just only about the rich countries. You look at, in fact, some of the Latin American countries. Look at Nicaragua, Cuba, Bolivia. Look at even Uganda. These are the countries, or sorry, Rwanda. You look at some of these countries where you have more than 50% members of the parliaments are women. So it means, it's not that only the members of parliament perhaps, this is a reflection. But if you look at, say, for example, the UN, because this is also one of the targets of the SDG, but if you look at, say, the positions of women in the leadership, they said it will take more than 140 years to reach that state. So it means, there is a huge task
And these are the kind of issues which we were able to bring together. And unless India is able to achieve some of those targets, we are not able to achieve, the world is not able to achieve those SDG targets. Because if you, I mean, by 2030, still, if we go by the same trend what we have today, you know, you will have something around 500 to 600 people, million people, those will be below poverty. Is a scary estimate. It's a scary estimate, and the large concentration of those poor people would be in South Asia. So unless really India moves, and that's what the hope from the, I mean, of the world is, that India is going to move further, and that's going to, you know, achieve one of the sustainable दीपक श्रीवास्तव जी, अगर आप गौर करेंगे तो लगातार पिछले 3 दिनों से तमाम मुद्दों पर बड़ी सार्थक चर्चा हुई। देश और दुनिया के तमाम देश यहाँ पर इकट्ठा हुए और जिन मुद्दों पे चर्चा हुई हम आप जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 3 दिनों में 3 मुख्य बातें आपके नज़रिए से क्या रहीं? देखिए, एक बड़ा अजीब सा संयोग रहा कि P20 मीटिंग के शुरुआत के साथ मध्य पूर्व एशिया में इज़राइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हो गया, और उस संघर्ष की शुरुआत एक टेररिज्म इंसिडेंट से हुई। सो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, और जिस पे G20 ने पहले विचार किया था जी, और इसके बाद अब P20 ने भी किया है। ये बहुत ज़रूरी है कि विश्व के सारे देश एक साथ जुट के इस उग्रवादी फ़िलॉसफी या टेररिज्म इसके ख़िलाफ़ संघर्ष करें। तो एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट आउटकम रहा। दूसरा, जो जैसे अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें इंडिया ने काफ़ी हम आगे बढ़े हैं, लेकिन और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये बड़ी अजीब विडंबना है कि इंटरनेट की एज में डिजिटल डिवाइड और बढ़ गई है। जी जी। और अगर आप देखें तो एक तरफ मुल्क हैं जहाँ 90% इंटरनेट पेनिट्रेशन है, दूसरी तरफ मुल्क हैं जहाँ पे शायद 50-60 है, और कुछ ऐसे हैं कि 30-35 से भी कम है। तो जब तक, और वो उस पर निर्भर करता है टेलीकॉम की कॉस्ट पे, तो जब तक इन चीज़ों पे आगे बढ़े। लेकिन P20 मीटिंग से ये हुआ कि इस मुद्दे पे एक स्पॉटलाइट आई, जिससे आगे बढ़ने की बात होगी। और तीसरा, जो मेरे ख़्याल से वो फिर हमारे सहयोगी साहब ने कहा कि वो स्त्रियों का सहयोग, और ये ज़रूर है कि हमारे पार्लियामेंट में शायद प्रतिशत उतना ना रहा हो, लेकिन अगर आपको याद होगा हमारे पार्लियामेंट में बड़ी इम्पॉर्टेंट विमेन पर्सनालिटीज़ रही हैं। इसमें मिसेस मीरा कुमार थी, स्पीकर थी, नजमा हिप्तुल्ला स्पीकर थी, और ये जो P20 अभी हुई है, ये G20 और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के साथ हुई है, और नजमा हिप्तुल्ला इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की भी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, और अब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, और हमारे कम से कम 3 बड़े प्रदेशों में मुख्यमंत्री रही हैं, बड़ी अभी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ममता दीदी, लेकिन ये ज़रूर है कि इस प्रक्रिया को आगे और बढ़ाना चाहिए। प्रोफेसर गुलशन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मैंने जॉइंट स्टेटमेंट पर गौर किया तो पाया कि जेनोफोबिया पर भी बहुत ज़्यादा तमाम देश के लोगों ने चर्चा की कि नस्लवाद और असहिष्णुता जिस तरीके से विश्व स्तर पर बढ़ रही है, इस पर भी चिंता व्यक्त की गई है। देखिए, ये हालांकि जो मुद्दे थे, जब शुरुआत हुई थी, जब पहले बताया गया था ये 4 मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी, लेकिन जैसा आपने कहा कि जब आप जॉइंट स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें कई ऐसे मुद्दे उसके अंदर जुड़े हैं जो हमको पहले शायद था कि ये मुद्दे जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं आएंगे। अब हालांकि पैराग्राफ 19 से लेके 26 तक पैराग्राफ है, वो तो G20 का जो समिट का यूक्रेन के बारे में जो बातचीत थी उसको रिप्रोड्यूस किया गया है। लेकिन आतंकवाद के बारे में, काउंटर टेररिज्म के बारे में, उसके अलावा जो है माइग्रेशन के बारे में, और भी 2-3 ऐसे मुद्दे उसके अंदर आए हैं। और नस्लवाद का जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का भी माहौल है, मुझे लगता है वो भी है, जैसे एम्बेसडर साहब बता रहे थे, जब ये G20 की समिट हो रही है
उस समय हम ये भी देख रहे हैं कि एक आतंकवाद का एक बहुत भयानक रूप भी हमने देखा है। उसके बाद जिस तरह की वहाँ पे जो अभी कोशिश जारी है, पूरे के पूरा एक कलेक्टिव पनिशमेंट की जो बात हो रही है फ़लस्तीन के बारे में, तो वो सारे मुद्दे भी मुझे लगता है ज़रूर उसके बारे में बातचीत वहाँ पे हुई होगी। हालांकि यूक्रेन के बारे में जैसे कहा कि ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना इनफैक्ट G20 की और G20 के समय और बाकी सारे जो ग्रुप्स हैं उसकी रही है, क्योंकि G20 जैसे आप जानते हैं वो बना था आर्थिक मुद्दों के बारे में बातचीत करने के लिए, और काफ़ी देर तक उसके अंदर आर्थिक मुद्दे ही उसके बारे में बातचीत होती रही, चाहे वो सब प्राइम क्राइसिस के बाद की बात थी या उससे यूरो क्राइसिस की बात थी। उसके अंदर एक अच्छी भूमिका G20 ने अदा की थी। लेकिन बाद में भारत ने पिछले 7-8 साल में देखें तो भारत की जब भी इंटरवेंशन रही है G20 के सम्मेलनों के अंदर या उसके दूसरी मीटिंग्स के अंदर, उसमें भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उसके अंदर उठाया था। लेकिन अभी एक सहमति ये भी बनी है कि भले ही जो कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि यूक्रेन के बारे में पिछले 2 साल से हम जानते हैं, 1.5-2 साल से पूरे G20 को हाईजैक जो है वो पूरा यूक्रेन के मामले ने किया था। लेकिन यूक्रेन का मामला अभी भी आप देखते हैं कि 5-6 पैराग्राफ में उसके बारे में जो भी सहमति बनी थी वो रिप्रोड्यूस हुई है। लेकिन अभी जो मुख्य वहाँ पे एक और कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में डायरेक्ट कोई रेलिवेंस, कोई डायरेक्ट उसके बारे में बातचीत नहीं हुई। हालांकि अगर हम कन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं उसके बारे में इनडायरेक्ट शायद बात की गई है कि जो आतंकवाद है और जो इस तरह की जो अभी जो ट्रेंड्स जो डेवलप कर रहे हैं उसके बारे में सारे देशों को, G20 को और बाकी सारे देशों को मिलके इसका सामना करना पड़ेगा और कोई सहमति बनानी पड़ेगी। Exactly, and let's go across to Ambassador Prabhu-Dayal. Ambassador Prabhu-Dayal, G20 no longer remains just a financial forum to discuss financial issues facing the world, or as we've been discussing development-related issues. Now, as we saw in this summit, and as we saw the Prime Minister mention it yesterday, and then again in the outcome of P20, they're talking about terrorism and serious issues that the world faces today, conflict situations that the world faces today, which has further increased or given a new dimension to G20 as a forum, as an organization, as a group. Well, you very correctly pointed out that the G20 is no longer merely an economic forum. It was conceived of as an economic forum because the world was facing tremendous economic challenges, and then the G20 was set up. But political and global challenges have a definite impact on the global economy. So it is necessary to also look at those factors which are having the effect of impeding global growth. And the Prime Minister was able to very correctly emphasize that conflicts and confrontations being faced by the world today do not benefit anyone. In fact, this has been the underlying theme of what he has tried to convey during India's presidency of the G20. In fact, the theme of India's G20 presidency has been Vasudhaiv Kutumbakam, one earth, one family, one future. And the Prime Minister in his address yesterday emphasized that it is time to move together. And unless we do that, we cannot overcome the global challenges. I think that in this context, the very timing of the P20 summit is very important. The world today is hopelessly divided. It was already divided on account of the Russia-Ukraine war, and it has become further divided after Hamas's terrorist attack on Israel. And the Prime Minister very correctly emphasized the fact that while it is the time for development and welfare for all, terrorism is a major global challenge which needs to be overcome. And there is no doubt that the message he delivered
to the P20 certainly had an impact on the framing of the deliberations and the joint declaration. Because how can the world face economic challenges or political challenges if terrorism is not checked? And I think the Prime Minister very correctly pointed out that the very definition of terrorism has not been arrived at the United Nations, where this matter has been under discussion. And how long can the world keep on waiting for a UN convention against terrorism? Because terrorism is a highly negative factor in global politics, and it has to be checked. Some countries continue to sponsor it, like our neighbor Pakistan. Some countries continue to support sponsors of terrorism, like China, which protects Pakistan-based terrorists. So the emphasis on terrorism, which the Prime Minister placed, was very timely, and he was able to emphasize how this and some other factors, like the Russia-Ukraine war, for instance, divide the world, and it is important to end this divisiveness. Right, sir. And Ambassador Srivastava, as Ambassador Prabhu Dayal pointed out, how can there be sustainable development in the world or other development-related, matters that we are discussing, giving more power to women, giving them more roles, or we are talking about green energy and digital economies and all. How can these things prosper unless and until there is no peace in so many parts of the world? And that is something that we address first. True. If you look at the UN's budget, UN's budget has two different streams. One is the peacekeeping budget, and the other is the developmental budget. Now, the peacekeeping budget is above $7 billion, and for development, there is less than $1 billion. Now, you take into account also there are UN agencies which deal with development matters. Still, there's a huge divide. Now, these numbers that we are talking about, 7 billion or 10 billion, they pale into insignificance considering the resources required. Right. Because if you look at the international financial flows, they are into hundreds of billions. So, if you have to bring out something like 2 billion people from below the poverty line, you need much larger scale of resources. There is no willingness on part of the rich world to address this problem. And now we have a problem of climate change. We have to see that it's not an either or choice between development and climate change. Right. You need resources for both. And this, it should not be that, the developmental resources are diverted for fighting clean environment. A poor fellow who's needs food today, he's not going to survive to see a greener world tomorrow. So these are very major issues, and I think the parliaments have to take a lead in bringing the focus back on these issues. Right, sir. प्रोफेसर गुलशन, धरती को बचाने के एक तरीके से कह सकते हैं कि सम्मेलन में तमाम देशों ने हिस्सा लिया और गहरी चिंता भी व्यक्त की नेचर के लिहाज से कि प्रकृति को हमने बहुत कुछ दिया और हमने इसके बदले में मानव ने क्या दिया नेचर को। तो इसके दूरगामी असर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको क्या लगता है कि क्या इसकी एक बेहतर शुरुआत इस P20 के समिट के बाद से होगी? देखिए, ये जो मुद्दे हैं जलवायु परिवर्तन के, ये सिर्फ P20 में पहली बार तो ये बातें हुई नहीं है। इसके बारे में दुनिया में बहुत सारे मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, चाहे वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, UNFCC हैं, और बहुत से सभी देश उसके अंदर बातचीत करते रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है, और सबसे बड़ी बात जो अभी इस बातचीत से निकल रही है, और ये बात को आपने उसमें भी नोटिस किया होगा, इसको P20 का जो डिक्लेरेशन है उसमें भी ये बताया है, उन्होंने इनफेक्टिवनेस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस की जो बात कही है कि जो ग्लोबल गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन का मामला हो, चाहे वो व्यापार का मामला हो, अब WTO देख लीजिए, WHO देख लीजिए, UNSC देख लीजिए, क्योंकि ये सारे, चाहे वो सिक्योरिटी के मामले हैं, दूसरे किस्म, वो वहाँ पे जिस तरह का लॉकजाम है,
जिस तरह पे वहाँ पे कोई भी मुद्दा आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन का युद्ध हमने देखा, 2 साल होने को आ गए हैं, यूएनएससी को इसके बारे में बातचीत नहीं कर पा रही है। पिछले एक हफ्ते से हज़ारों लोग मर गए हैं यूएनएससी का, हमने अभी तक कुछ उसके बारे में कुछ इफेक्टिवली कर पाएंगे या नहीं पता, हमको नहीं कर पाएगी। तो अब क्योंकि वहाँ पे इनफेक्टिवनेस हो गई है, तो इसलिए और जितने G20 इसलिए भी महत्वपूर्ण बनती जा रही है, और G20 के जो बाकी ग्रुप्स हैं, क्योंकि वहाँ पे जब आप कोई नतीजा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अब इसके अंदर पहले G7 था, अमीर देशों को लगता था कि हम ही सब मिलके कुछ दुनिया का दिक्कतों का हल निकालेंगे, तब उनको लगा कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि दूसरी अर्थव्यवस्थाएं इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, तो G20 बना। G20 के बाद सर आपको लगता है कि सर एम्बेसडर श्रीवास्तव, हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के जिस तरीके से मिस्र के शर्म अल शेख में क्लाइमेट फाइनेंसिंग का एक बड़ा मुद्दा उठाया, तमाम विकासशील देशों ने, जिस तरीके से विकसित देशों ने एक तरीके से नुकसान किया है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, एक बड़ा मुद्दा है। भारत ने इसमें एक अच्छी लीड किया, अच्छी पहल किया। इस पर आपके क्या विचार हैं? शर्म अल शेख समिट में लॉस एंड डैमेज फंड, इस पे एक सहमति हुई थी, लेकिन इस सहमति को एक प्रैक्टिकल रूप देने में अभी बरसों लगेंगे। उसके लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, और डेवलप कंट्रीज़ को आगे आना है उसको फंड करने के लिए। जो लॉस एंड डैमेज की बात हो रही है वो डेवलप कंट्रीज़ के, उसमें चाइना भी शामिल है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया है, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ है, उसका नतीजा है। इसलिए उनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज चाइना विश्व का जो कार्बन बजट है उसका 30% हिस्सा सिर्फ चाइना यूज़ कर रहा है, और ये प्रतिशत जो है जैसे हम आगे बढ़ेंगे सन 30 तक और बढ़ जाएगा, क्योंकि EU और US अपना कम कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने G20 में क्या कहा, उन्होंने अभी चाइनीज़ स्टेटमेंट UNGA में क्या हुआ, उन्होंने कहा ये तो डेवलप कंट्रीज़ का काम है। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बात पलट दी। तो ये एक बड़ा लंबा संघर्ष है। हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास, दुनिया के पास अब वक्त नहीं है, क्योंकि 1.1 डिग्री टेम्परेचर थ्रेशोल्ड ऑलरेडी क्रॉस हो गया है। UN में एग्रीमेंट था 1.5 डिग्री, वो मेरे ख़्याल से UN का अनुमान है कि वो अगले 12-13 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर उस 12 साल की इस बड़ी छोटी अवधि में अगर एक ना सिर्फ सहमति हो बल्कि उस पर काम किया जाए, और उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, वो कोई देने को तैयार है। एमिशन स्टैंडर्ड्स तो स्ट्रिक्ट हो गए हैं, लेकिन जो फिनेंशियल कमिटमेंट्स हैं वो 2015 में जो उन्होंने 100 बिलियन कहा था उसके आगे बढ़े ही नहीं। Exactly. एम्बेसडर दयाल, आपने कल प्रधानमंत्री के भाषण को सुना, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने विमेन लेड डेवलपमेंट की भी बात की, और आप जानते हैं कि देश ने एक ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल जो 3 दशक से ज़्यादा पेंडिंग था देश की संसद में, उसको नए संसद भवन में उसको पास कराया। तो देश और दुनिया जानती है किस तरीके से आधी आबादी जो देश की है उसको कहीं ना कहीं नुमाइंदगी मिलने जा रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि ये जो समिट है इस लिहाज से आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा? एम्बेसडर दयाल, मेरा विश्वास है कि जो भी कदम हमने इस P20 समिट में उठाए हैं, जो हमने कदम लिए हैं, ये जरूर मील के पत्थर जैसे साबित होंगे। देखिए, हम खुद जो करते हैं वही दर्शाते हैं, और कोशिश करते हैं कि अगर दूसरे देशों को कुछ फायदा हो हमसे सीख के, तो वो ये जरूर फायदा उठाएं। ये जो हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं उसको हम कार्यान्वित भी करते हैं, हम इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखिए, हमने कोविड के दौर में वैक्सीन डिप्लोमेसी अपनाई और 150 से ज्यादा देशों को या तो वैक्सीन दी या कोविड रिलेटेड मेडिसिन दी। तो ये बहुत जरूरी है कि दूसरे देश इस बात पे गौर करें
कि एक साथ मिल करके काम करना कितना जरूरी है। और यही सबसे अहम मील का पत्थर है जो हमारी इस P20 प्रेसिडेंसी एंड ओवरऑल G20 प्रेसिडेंसी से साबित होता है। अब देखिए, P20 की एक बहुत बड़ी अहमियत यह है कि ये भारत में हो रहा है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा, भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। और इसके अलावा उन्होंने ये बात भी स्पष्ट करी कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीन गणतंत्र है। देखिए, वेस्टर्न नैरेटिव है कि ये डेमोक्रेसी का जन्म ग्रीस में हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री ने बार बार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, समिट फॉर डेमोक्रेसी में और अभी ये P20 समिट को कल एड्रेस करते हुए ये साफ साफ बताया कि देखिए, भारत में तो डेमोक्रेसी ग्रीस से और भी बहुत पहले से, तो हम जो हैं वो कदम उठाते हैं जो हमारे पूर्वजों ने पहले उठाए थे और उन्होंने हमको रास्ता दिखाया था। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि देखिए, डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत से देशों में नहीं गहरी हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल मिर्जा दयाल, इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सरकार बहुमत से बनती है लेकिन देश आम सहमति से चलता है। बिल्कुल मिर्जा दयाल जी। Professor Sachdeva, talking of the challenges that we have, mobilizing, as we were discussing, mobilizing resources for implementation of SDGs is one challenge. How can the parliaments now come together after this very successful summit that we've had in New Delhi to overcome this? Well, I think you're absolutely right, because all these issues and challenges are quite well known, whether climate or SDGs and others. Now the question is, how do we really get resources for this? Right. One is that there are all the commitments which they have made earlier, particularly on the climate finance. I think in all these forums, these have been repeated again and again, and these developed countries have been told again that you must fulfill all the promises what you have made in all different forums in the world. And secondly, I think there is another point also, again I noticed in the declaration, they have also touched upon the international development architecture. Yes, I mean, country like India, we are working through South-South cooperation, but there is a certain global responsibility of the countries of the North, particularly within the OECD, you have a development assistance committee, and all those northern countries, at the UN, they did agree to 0.7% of their GDP for the development assistance to developing countries in the 60s itself. And if you look today, out of those 30 members of the OECD DAC, only about 4 or 5 countries have really reached that 0.7%. Now, one of the biggest providers of development assistance, United States, I mean, they are biggest, but at the same time, if you look at this, only about 0.2% of the GDP of the United States, because the economy is very large. So if they just fulfill the promises which they had made decades ago in different forums in the world, and I think they need to be reminded again and again, and this is what actually this forum has done. Right. अमृता श्रीवास्तव, चूँकि लगातार हमारे यहाँ सौर ऊर्जा को लेकर बात हो रही है, सोलर अलायंस को लेकर के बात हो रही है, तमाम जो जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी है इसके लिए बात हो रही है, आपको लगता है कि हम आने वाले कितने दिनों में इस जो हमारा टारगेट है कि हम जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं उसको हासिल कर लेंगे? देखिए साहब, ये तो कितने दिनों में हम ये करें, ये हमारी चॉइस नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जिस स्पीड के साथ हो रहा है, ये तो हमें जल्दी से जल्दी करना है। और उसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे लक्ष्य निर्धारित हुए हैं, सिर्फ उनसे काम नहीं चलेगा। हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी पहल की है और हमारा सुझाव था, जो माना भी गया, कि रिन्यूएबल एनर्जी का 3 गुना उसमें कैपेसिटी में इंक्रीज़ हो जाए। हम उस लक्ष्य पे ज़रूर 2030 तक पहुंच जाएंगे, और मुल्कों को भी पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस लक्ष्य पर पहुंच भी जाते हैं, चूँकि दुनिया के 60% जनता, उनका बिजली का जो कंजम्पशन लेवल है वो एवरेज से नीचे है,
तो हमें दो चीज़ें करनी है, डाइवर्सिफाई करना है क्लीन एनर्जी में, और इसके साथ उनका जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको बढ़ाना है, क्योंकि उसके बिना उन्नति नहीं होगी। ये जो दूसरा आयाम है ये अक्सर विकसित देश भूल जाते हैं। उनका कहना है कि आप अभी से एमिशन पीक कर चाहिए। अगर हम आज पीक कर जाएं, वो कर तो सकते हैं, लेकिन इसका नतीजा होगा कि सैकड़ों करोड़ लोग जो अभी गरीबी की रेखा के नीचे हैं वो वहीं रहेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी चुनौतियां हैं कि हमें ग्रो भी करना है और डाइवर्सिफाई भी करना है, और जो टाइम लिमिट है वो श्रिंक करती जा रही है। लेकिन प्रोफेसर गुलशन, हमारे यहाँ ये देखा गया है कि बहुत सारे जो योजनाएं रही हैं, अभियान रहे हैं, वो जन भागीदारी से सफल हुए हैं अब तक की देखा गया। चाहे वो स्वच्छता का अभियान आप देख लीजिए, या जनधन स्कीम की आप बात कर लें, या देश उज्ज्वला स्कीम की अगर आप बात कर लें। आपको लगता है कि अगर व्यक्तिगत स्तर पे कुछ शुरुआत की जाए, लोगों को ये कहा जाए कि हाँ आप प्रकृति से दोस्ती कीजिए, आप उनसे फ्रेंडशिप कीजिए, आपके घर में अगर 3 AC लगे हैं तो उसको दो ही यूज़ कीजिए, आपके पास गाड़ी है तो आप इलेक्ट्रिक पर आइए, अगर आप बाइक पर हैं तो आप साइकिल पर आइए, अगर आप साइकिल पर हैं तो आप पैदल आइए। तो आपको लगता है कि ये इस तरह का जो जन आंदोलन है ना शीतल, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा है कि देश के स्तर पे एक बदलाव आएगा जब मोबिलाइज होगा ये, तो इसका एक बड़ा संदेश, व्यापक संदेश जब जाएगा, तो आपको लगता है कि इसका असर होगा? नहीं, उस पर दो पहलू हैं। एक तो ये है कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब तक ये इस तरह का मुद्दा जन आंदोलन नहीं बनेगा तो उसमें कामयाबी पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरी बात जो मेजर साहब बता रहे थे, क्योंकि हमारी जो अभी कंजम्पशन है एनर्जी की वो बहुत कम है। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन देख लीजिए भारत में, वो समथिंग एवरेज उसकी मुझे लगता है 1000 किलोवाट के आसपास है, जो दुनिया की 3000 के आसपास है, और यूरोप के देशों की 6-7 हज़ार हैं, और अमेरिका कनाडा आ गए 10-12 हज़ार, तो मतलब 10-15, और चीन की भी हमसे 5 गुना ज़्यादा शायद वो होगी। तो एक तो ये है कि वो हम बढ़ेंगे, वो उसको बढ़ना है, जैसे जैसे तरक्की होगी हमको चीज़ों को और उपयोग करना है, क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल तो पहले से बढ़ना ही है, वो इम्प्रूव उसमें होना है। लेकिन ये मुझे लगता है जैसे जो प्रधानमंत्री ने जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट वाली जो बात कही है, वो मुझे लगता है हमारे ऊपर से लागू, भारत के ऊपर तो लागू होती है, भारत के नागरिकों पे भी लागू होती है, उससे अलावा वो लागू होती है खास तौर से पश्चिम के देशों के ऊपर। जैसे G20 के अंदर मुझे लगता है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है सबसे कम है, और उसके अंदर हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सबसे कम है। तो वो हम तो खैर अपना जो भागीदारी करेंगे, हमारा इतना बड़ा देश है, तो हम वो वाला लाइफस्टाइल तो कभी भी अपना नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे 15 गुना अधिक अगर बिजली हम अपनी शुरू कर लेंगे कंज्यूम करनी, वो शायद पॉसिबल ही नहीं होगा। जिस तरह की बदलाव आ रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज तो बदल सब वो है, लेकिन उनके लिए ये संदेश है कि हम तो कर रहे हैं, लेकिन आप भी अपना जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल बदलिए, तभी जाके दुनिया के जो बड़े मुद्दे हैं उसके ऊपर जो है कोई काबू, उसका कोई हल निकाला जा सकता है। एम्बेसडर दयाल, जिस तरीके से सर कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल जिसकी शुरुआत भारत के गुजरात राज्य के केवड़िया से की गई, और उस पर UN महासचिव भी मौजूद थे, आपको लगता है कि पश्चिम में कितना असर करेगा ये लाइफ? देखिए, जो हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं वो हम खुद इंप्लीमेंट पहले करते हैं। अब जैसे सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पे ये P20 फोकस कर रही है जी। तो हमने तो बड़े ठोस कदम उठाए हैं सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, जो आवश्यक होता है उसको करने के लिए। अब विमेन्स एम्पावरमेंट की बात, तो हमने तो खुद ही एक्ट बना के लोकसभा में और जो राज्यों की विधानसभा उसमें 33% रिजर्वेशन विमेन को दिया है। तो जो हम बात करते हैं वो पहले हम खुद ही इंप्लीमेंट करते हैं, और दूसरे देश इस बात की सराहना करते हैं। देखिए, एक बहुत अहम बात यह है कि हमारा ये मानना रहा है और इसको हम दोहराते रहे हैं कि पार्लियामेंट जो होती है वो लोगों तक बात पहुंचाने का एक बहुत अहम माध्यम होता है जी। और प्रधानमंत्री जी ने ये सही कहा कि ये P20 समिट एक महाकुंभ है पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस की।
दुनिया में जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जा रही हैं उनके बारे में विचार करना साथ बैठ के, और इस संदर्भ में जो हमारी पार्लियामेंट ने चीजें अचीव की हैं वो साफ तौर पे इस P20 समिट के Right, sir. Ambassador Srivastava, we've spoken about mostly all the issues. Coming to the issue of women-led development, how long is the road there? There has been a consensus among all countries, and there has always been. And in India, we've seen reservation for women. We see how empowered our women are getting. And how long is the road to a world where we have women-led development? You know, what is your take on that? it's going to take some time. I don't want to create an illusion. The women have to struggle against centuries of prejudices, which you know. And these are ingrained not only in the psyche or the social customs, these are ingrained in religious faiths. So it's not very easy to overcome them very quickly. Now this is the intangible part. The tangible part is that, you know, they need employment, they need, you know, education. And even today, the women's literacy rate in most countries in the developing world trails behind the men's literacy rate. This is not because the women are not as intelligent, they are more intelligent. And, you know, again, let me give you a contrast. While they trail behind the men in terms of literacy rate, in terms of tertiary education, in many countries, India, I was ambassador to Iran, the women are much ahead of men. Tertiary education is a high level. So, given equal opportunity, they can do equally well, if not better. But this is a transformation which is going to take time. Now, apart from the politics and the government service, this also requires change in the corporate sector. In fact, the corporate sector lags behind both and above all, the mindsets, as you said, that is the biggest challenge, Professor, isn't that? Well, I mean, you know, I mean, as I was mentioning in the beginning, I mean, you asked the timeline. And you said 140 years. No, 140 is just for the leadership. Yeah. But there are in many other, you know, areas, it will take even, say, you know, more than 200 years. This is what, I mean, they have really figured it out. So it means, you know, I mean, the challenge is really huge. Now, and this is precisely exactly, I mean, you know, I mean, instead of, I mean, one aspect is, you know, women-led development, and there are so many other aspects of women empowerment. And all these issues cannot be really, you know, resolved, or at least have a satisfactory conclusion, or at least by within the 2030 SDGs itself, unless there really is very serious effort. Like, this is, I mean, and this is the brighter picture. This is the brighter picture. At least we are talking about it. We are talking about it. In fact, you know, even not just talking it. about it. I mean, if you see this women reservation bill, I mean, we have been talking about it for so long. At least something has happened. It may take another perhaps few years, but at least some movement has taken place in that direction. These are the things really we need, and that might lead to something more in this direction. And we are prioritizing it. We are prioritizing. In the G20 discussions, Absolutely. the declaration, it was very prominently mentioned. कहा जाता है किसी भी कामयाब पुरुष के पीछे महिला का योगदान होता है। और आपको लगता है कि जब महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद में जब इतनी सारी महिलाएं देश की मुख्य धारा में शामिल होंगी, तो आपको लगता है कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर एक कंस्ट्रक्टिव वे में अगर हम सोचें तो आएगा? नहीं, उसमें सिर्फ लगने की बात नहीं है, तो फैक्चुअल है कि जहाँ भी औरतों ने लीडरशिप दिखाई है, सिर्फ टोकन लीडरशिप की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। वैसे तो देखा जाए जैसे हमारे पूरे साउथ एशिया में लीडरशिप रही है वुमेन की, प्राइम मिनिस्टर भारत में ही रहे, पाकिस्तान में भी रहे, श्रीलंका में भी रहे, बांग्लादेश में भी है। सो वो, आई मीन, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अहम चीज़ है, उसको हम कम, लेकिन उसके साथ साथ पूरे जो सोसाइटियल ट्रांसफॉर्मेशन जब तक नहीं होगा, हर पूरे हिस्से के अंदर उनका पूरा भागीदारी नहीं होगी, लीडरशिप नहीं होगी, तब तक पूरा जो समाज है वो आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। इसके बारे में पूरी सहमति बनी हुई है, लेकिन फिर भी जो हमारी जो समाज के अंदर और लीगल तौर से जो चीज़ें जिसको हम कर सकते हैं जितनी तेज़ी से उतनी तेज़ी से करनी चाहिए। जी। And the parliaments
parliaments can play a big role in it, Absolutely. as we've seen in the statement. How can the parliaments, what kind of a role the parliaments can play, and how can they accelerate this process of women-led development, which we all assume and think will take a lot of time because of the mindsets and psychological factors that we've had? You know, the parliaments have a very important normative role. They lay down the norms, and this perhaps is even more important than legislation. So if the parliaments give the lead that more women have to come forward in lawmaking, this will also be a signal to, for instance, the corporate sector, to government, to other segments of society, to let the women come forward and assume a much more important role, not simply following the men's lead, but actually to lead them. And wherever they have led them, they have been taken very mature decision. I'll just give you one example. You know, we talk about parliaments, and this is the apex. But you know, starting in Bangladesh, this about 20 years back, microcredit scheme that help the women entrepreneurs to get some extra income on the side. India government had some similar scheme. It was called Antyodaya when I started my career 40 years ago, which means Antyodaya means the last person in the chain. He or she must be brought up, and this was. In fact, it preceded the microcredit scheme by 20 years. It didn't get, the kind of attention and the focus it deserved. But this was very successful because it gave loan to the women, and they could, and of course men, in the lowest Economy section in of general. society, and they came forward. But this needs to be sustained at a much higher level. Right. And at rates which are affordable. You can't expect, the banking rates, they would not be able to Afford it. afford it. No, in those parliaments, you can see where you have more number of women. I mean, the quality of debate is different. I mean, you look at, say, many of the European countries where you have 40 to 50% women parliament members. I mean, debates even on foreign policy is very, very different. In many of those countries, I mean, they have really come out with the feminist foreign policy. I mean, foreign policy, which used to be a very different kind of, very very elite, man-oriented kind of, issue. How it really affects women. I mean, what is happening in all the conflicts? Who is going to be affected more? And obviously, I mean, when, what you see, I mean, all the conflicts, whether it's Ukraine or whether what we are seeing in Palestine, it's the women and children which are going to be the first affected. So what kind of foreign policy really we are following? And who is going to be affected more? And I think the women are much more, in forefront of bringing those issues when they are in the leading position and they are sitting in the parliament. And this has actually been proven. Factually, you can look into the debates on those And parliaments. that Ambassador Dayal, would actually be sustainable development. Yes, indeed. It would be sustainable development if it is also inclusive. And India's message through the P20 summit has been that the human-centric approach should be adopted for realizing sustainable development. You have to carry everybody with you. India's policy itself has been Sabka Saath, Sabka Vishwas, Sabka Vikas. And that is the message which we are trying to convey through our chairmanship of G20 and now the P20. We have been emphasizing that in this day and age, we should realize that it is time for everyone's development. Of course, sustainable development can only take place when there is global trust. And India has been trying to emphasize that there is a need to remove obstacles which lie in the way of global trust. And it is time to build peace, brotherhood in order to move forward, because you can't realize the sustainable development goals. You cannot accelerate progress in that regard if global trust is absent. एम्बेसडर दयाल, सेलेक्टेड विकास एजेंडे से हटकर समिट के दौरान वेस्टर्न एशिया और मिडिल ईस्ट
के जो पॉलिटिकल इशू पर भी चर्चा की गई और किस तरह से उस क्षेत्र में सप्लाई चेन को बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा देखने को मिली। देखिए, ये जो P20 समिट है, इसकी टाइमिंग ही ऐसी है कि जो मिडिल ईस्ट में घमासान युद्ध मचा हुआ है, उसको तो अपने नजरिए में, अपने ध्यान में रखना ही था, क्योंकि इतनी तबाही मच रही है और इतने लोग घर से बेघर हो गए हैं, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। तो क्योंकि ये समिट ऐसे वक्त पर हो रही है जब इतना घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है, तो इसके जो नतीजे ध्यान में रखना, उस पर चर्चा करना, तो इस P20 समिट के लिए बहुत आवश्यक है। अब आपने ये बात की सस्टेनेबल सप्लाई चेन्स की, जी देखिए, बहुत जरूरी है कि सब देश इस बात पे विचार करें कि सप्लाई चेन्स हमेशा बनाए रखे जा सके। कोविड में सप्लाई चेन्स को लेकर एक बहुत परेशानी हुई, क्योंकि चीन ने ये सप्लाई चेन्स अपने कब्जे में किए हुए हैं और वो नहीं चाहता कि ये उसके कब्जे से बाहर जाएं। उसका जो BRI है, उससे उसने तमाम देशों को कर्ज में डुबो दिया है और वो वही करते हैं जो चीन चाहता है, जैसे श्रीलंका, जैसे पाकिस्तान। तो इस वजह से ये जरूरी है कि ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स निकलें, और भारत जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ इस बात में काम कर रहा है। और इसी वजह से ये G20 समिट में जो वार्ता हुई, उसके साइडलाइंस पे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में एग्रीमेंट हुआ। ये जो G20 समिट से ये बात निकली कि ऐसी एग्रीमेंट का साइन करना मुमकिन हो पाया। तो मेरे विचार में जो हम इस बारे में काम कर रहे हैं, वो समय की गुहार है। इट इज द नीड ऑफ द आवर। और अगर हम इस मुद्दे को निग्लेक्ट करेंगे तो इससे दुनिया का बहुत नुकसान होगा। Ambassador Srivastava. You know, the momentum generated by P20 summit in Delhi has to be maintained, and it's very important because if you look at most of the multilateral organizations from the UN to BRICS and whatever, there is a certain slowness. In fact, most of them are paralyzed now. If the speakers of parliament can take this message directly to the people, you can get around this roadblock which is there because of the rift in the Security Council, rift between the East and West and so on. So I think it's very important now. We are looking forward to Brazil's presidency, and it's very important to sustain this momentum, take it directly to the people through the parliaments, as the Prime Minister says, and this will be a major step forward. Right. प्रोफेसर गुलशन, आखिरी रिमार्क क्या है आपका इस पर? देखिए आप, when there is the global institutions of global governance, when they are ineffective, at the same time when there is a serious geopolitical tension, you can see all around. It's not just only about what is happening at the Ukraine. You also have the serious tension between US and China, and there are many other places where things are happening. Now, at that point of time, I think the way I think India has conducted G20 and all other meetings of G20 in India, and also tried to broad the agenda of Global South at the G20 by bringing African Union into G20, and I think many of those issues put them together, because P20 is just one of the forum of G20. So ultimately, many of the things which were discussed before summit meeting, and and certain conclusion was made at the G20 meeting. Now some of them things have been repeated here, but involving more and more stakeholders. Because unless you really involve, because ultimately G20 is what? Because ultimately many of those things would be implemented either at the national level
or it has to be agreed at the international level in the different multilateral forum, because those are the places where things actually have to be implemented. If we are talking about women-led development, now all 20 countries and other countries have to implement those policies in their own countries. Just talking about in G20 is not going to work. So that's what, in fact, I think slowly and slowly the message has to be there, whether it's a lifestyle for environment, or it's about women-led development, or many other issues. And how do you really bring people together when there is serious tension and ineffectiveness of the global governance? This is what I think India's leadership, during G20 and different meetings and have that shown. brings me to my next question, and that's a direct question, Ambassador Prabhudev, and I'll bring it to all of you. Do we see India emerging as the global alternative, the global solution that everybody is seeking or looking for? Is that question to me or to everybody? To you, and then I'll come to the other guests. I think that India, through its presidency of the G20, has been able to send out a very clear message that it deserves a much greater role in world affairs, and that in fact it should be a permanent member of the UN Security Council. The global structure needs to be reformed. The Prime Minister has repeatedly emphasized it. The United Nations was set up in 1945. The world has changed since then, and the global structure must take this into account. Now, India's policy has been towards helping the global south. Their needs have to be factored in. And it is foremost amongst the countries that are trying to help the countries which need help. So, in other words, we have been able to convey the goodwill that we have towards the rest of the world, our sincere belief in one earth, one family, one future, and the fact that we as a country deserve to be given a much greater opportunity to play the role which we deserve to play in the world, and that, in fact, that would be to the benefit of other countries. Right, sir. Ambassador Srivastava. India's role is already recognized by most of the countries, and this is not only developing world, but also 4 of the 5 permanent members of the Security Council. So we don't have to worry on that score. There is a stalemate, and that stalemate is because of one country. And it's people have forgotten that in permanent membership was offered to India. It was India which decided to wait for PRC to come forward. And once they became permanent member, the first veto they cast was on Bangladesh issue. So that is politics. But we have to keep in mind our natural constituency is the global south, and we have to take them along, and we are part of that. Thank you. Right, sir. Well, India was always a big country. India was always democracy. Now, what has really happened in the last 20-25 years, I would say that, the sustained economic growth of 6 to 7%. This has really changed. So India has become a big market, and as a result of that, it has its own strategic consequences. Now you have more than 35 countries with whom we have signed strategic partnership, and around 15 countries where we have signed trade agreements, and many more we are negotiating. So as a result, importance of India has increased. So obviously India is also looking for playing much bigger role. हम सीधा रुख कर रहे हैं यशोभूमि, जहां पर हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता मौजूद हैं, जो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं. अमरेंद्र, क्या कुछ खास है अभी तक वहां पर, संक्षेप में? देखिए टीपू, अगर मैं बात करूं साल 2023 की, तो भारत के लिहाज से खासा एक अहम साल माना जा सकता है, जहां एक और भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी ओर साल 2023 में भारत ने G20 का सफल प्रेसिडेंसी के साथ एक सफल वैश्विक मुद्दों के साथ समापन किया, और उसके तुरंत बाद इसी साल में हमने आज P20 यानी कि पार्लियामेंट 20 का एक सफल समापन कई मुद्दों के गंभीर मंथन और कई लक्ष्यों के साथ किया. टीपू, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियां हैं और जिसको भारत लगातार एड्रेस करता रहा है, उसके लिए
P20 का मंच एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच माना जा सकता है। और जिस तरह से भारत का वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वो फॉर वन पार्लियामेंट्स के लिए हमने माना है कि पूरी दुनिया हमारा घर है और उनकी सभी की वैश्विक समस्याएं मिलकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। We'll come back to you soon, and thank you, Ambassador Srivastava, Professor Sachdeva, and Ambassador Prabhu Dayal for joining us. We take a short break here. Keep watching Sansad TV.